हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, वो कहते हैं कि हम हर तरह के बैकग्राउंड से स्टूडेंट लेते हैं, बट सच ये है 50% ऑफ द स्टूडेंट्स हु गेट एक्सेप्टेड टू दीज यूनिवर्सिटीज आर कमिंग फ्रॉम एलीट स्कूल्स। फॉरेन यूनिवर्सिटीज का आरओआई कैसा है कंपेयर टू आईआईटी, आईआईएम, खासकर क्योंकि आप 1 करोड़ का लोन भी ले रहे हो विदाउट अ गारंटी ऑफ अ जॉब। I was calculating my ROI from day one कि I will be covering housing expenses और सिर्फ tuition घर से लेनी है for 1 year. I saw so many people doing on-campus jobs. उनको $600 to $1,000 per month मिल रहे थे. So first week में ही on-campus job मिल गई. Email से नहीं, but knocking doors से. Like physically knocking doors, saying कि Correct. please, my name is Khan and I can do anything. Exactly. Trump announces कि देखो international admissions करनी नहीं है Harvard University पे. तो in that situation, how does your ROI calculation change? What's happening right now in the US is unprecedented. 50 years में कभी ऐसा तो हुआ ही नहीं है कि international students are attacked the way they are attacked right now. Harvard had ban on international students. It took 24 hours to judge to revoke that. Within that 24 hours, all the students who were interviewing for Harvard, they got rejected. They will be paying out of their pocket $200 दोबारा वीजा इंटरव्यू देंगे. Salaries हम expect कर सकते हैं, especially for entry level freshers. तो वो ballpark कितने figures होते हैं? Tech में it will be like 180K if you're in Bay Area, San Francisco, 150K in New York, Seattle, etc. And like in any other average city, like close to 100K. मेरे टाइम पे तो यही कहा जाता था, average university in the US is better than average university in any country. US gives you more for the efforts you put in, more for the dollar you make, at least in the tech sector. You can name some exceptions like Atlassian is giving 1 CR in Bangalore, but average cases mein, it is true that US gives you more in your hand. Let's face it, life is a lot more easier and comfortable in India. तो फिर भी क्या आपको लगता है the trade-off is worth it? Is comfort to learn to become self-independent, or comfort is becoming lazy and get everything in 10 minutes and not going out of the house? वो जो internship का stipend था, that $10,000 immediately went to reduce tuition fees का जो भी load था. Is it realistic for students to expect इतना amount? They can expect even more. I have seen people जो $30,000 to $40,000 एक internship में कमा लेते हैं. That's crazy. और हाउसिंग भी इंक्लूडेड होता है बे एरिया में. तो माइक्रोसॉफ्ट तो सिएटल में आपको गाड़ी भी रेंटल फ्री देती है कि आप गाड़ी में चला के आराम से आओ ऑफिस. What? Roommate scam. या ऑफ कोर्स रूममेट अपार्टमेंट बुक कर लेता है, आपका नाम लीज में ऐड नहीं करता पर कहता है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा. आप पहुंचते हो, वो दूसरा रूममेट सेलेक्ट कर लेता है. क्योंकि दूसरी बात क्या होता है कि जो रूममेट आपने किसी को सब लीज किया है वो भाग जाता है, रेंट नहीं पे करता, आपके सिर पे बोझ पड़ जाता है. सो आई पेड $300. एक रूममेट था वो 600 भरता था, तो वो भाग गया. Furniture के साथ भाग गया. हाँ, अब कैंपस में दिखता है, मैं उसको कहता हूँ. आज बहुत मज़ेदार कॉन्वर्सेशन करेंगे ऑन व्हाट इट मीन्स टू स्टडी इन इंडिया वर्सेस द यूएस एंड अब्रॉड. सो आई हैव द बेस्ट पर्सन हियर फॉर दैट कॉन्वर्सेशन. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जब हायर स्टडीज़ की बात आई, हाउ कम यू पिक द यूएस वर्सेस इंडिया एंड वाई स्पेसिफिकली द यूएस? आपने कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं एक्सप्लोर किया? So I come from Punjab. So मेरे जो सोशल सर्कल में काफ़ी लोग SAT स्टडी अब्रॉड की तैयारी कर रहे थे. दैट इंस्पायर्ड मी एंड मुझे लगा कि मुझे भी कनाडा जाना चाहिए बिकॉज 80% of the classroom is going to Canada. But one event happened in my school, US College Education Board. They came to my school. उन्होंने बताया like you know US is the largest economy in the world. US gives you 3 years of OPT. ये सारी चीज़ें जब मतलब मुझे पता चली how much opportunities there are in the US, no other country has. ओबामा की स्पीच देखी from 2004. He mentions if there is any country his story is possible, it's the United States of America. So these things inspired me, like consuming content from America, Hollywood, all that just took me to one direction. मैंने US के अलावा कहीं अप्लाई नहीं किया. अच्छा, हाँ. तो जाना था कनाडा, लेकिन आफ्टर दिस इवेंट इट बिकेम द यूएस. Absolutely. गॉट इट. तो अगर हम आरओआई या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज का आरओआई कैसा है कंपेयर टू आईआईटी, आईआईएम, खासकर क्योंकि आईआईटी, आईआईएम में तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं. यूएस में आई नो दैट कॉन्सेप्ट डजंट एग्जिस्ट एंड आप 1 करोड़ का लोन भी ले रहे हो विदाउट अ गारंटी ऑफ अ जॉब. तो हाउ डज दैट आरओआई कैलकुलेशन हैपन?
So it's a different calculation if you're going for undergrad in the US or masters in the US. अगर आप undergrad के लिए जा रहे हो, मेरे लिए calculation ये थी कि fees will be anywhere between 50 lakhs to 1 crore at my time. You know, with inflation things change. वो हम बाद में बात करेंगे. It's now even up to 2 CR for undergrad. Like मेरे लिए calculation ये थी कि if I get my first job in the US, 4 years बाद रिटर्न आना शुरू होगा. बट दैट वाज नॉट माय क्वेश्चन. माय क्वेश्चन वाज कि मुझे फर्स्ट डे से कैसे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. आई वाज कैलकुलेटिंग माय आरओआई फ्रॉम डे 1. आई वेंट टू लिंक्डइन, आई सॉ यूट्यूब, आई सॉ सो मेनी पीपल डूइंग ऑन कैंपस जॉब्स. उनको $600 to $1,000 पर मंथ मिल रहे थे. आई वाज लाइक ये हाउसिंग तो कवर्ड है. डे 1 से ही तैयारी करनी है कि आई विल बी कवरिंग हाउसिंग एक्सपेंसेस और सिर्फ ट्यूशन घर से लेनी है फॉर 1 ईयर. सो फर्स्ट वीक में ही ऑन कैंपस जॉब मिल गई. ईमेल से नहीं बट knocking doors से, like you know, going to the place where jobs are in Like person. physically knocking doors, saying, ki, Correct. please, my name is Khan and I can do anything. Exactly. At my time, if I think of spending 20 to 25 lakh rupees per year, जिसको मुझे पता भी था स्कॉलरशिप मिलेगी. मेरी एक डेडलाइन कारण फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, बट आई गॉट इट फ्रॉम सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स. अच्छा. सो दैट वाज अ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप. पता था जाने से पहले कि मिल जाएगी. So हाँ, ये कैसे पता था? GPA out of 4 system more than 3.1 or 2, you will get this scholarship, which will reduce your fees for any international student fees to in-state fees. Like I was going to the state of Georgia in US. जो लोग जॉर्जिया के रेजिडेंट्स पे कर रहे हैं, मैं भी उतनी भरूंगा. So like $35,000 a year to $10,000 a year. Got it. तो ये मतलब एक in a way default scholarship है. If you meet the eligibility criteria, it's not like कि उसके बाद भी there is a further selection. नहीं, it was just straightforward. I'll get it, and मुझे पता था. So that's why I told you, right? I knew कि I'll be spending anywhere around 50 lakh rupees. But still 30 to 50 lakhs, I would say, is almost same as a private college at that time in India, like Manipal Institute. Like they charge 10 to 13 lakhs per year as well. So multiplied by 4, it will be around 50 lakhs as well. So I paid the same amount, but return that I got, like I got my first full-time job around $80,000, and usi mein hi I had enough savings ki I covered all of it. Don't you think this is also a function of your own hustle levels, right? For example, सब ये नहीं कर पाते getting a scholarship, or maybe they are really close to getting that CGPA marker but they just fall short. तो उनके लिए ROI calculation फिर different होते हैं. Sometimes it's not even in your hands. Trump announces कि देखो international admissions करनी नहीं है Harvard University पे. तो in that situation, how does your ROI calculation change? What's happening right now in the US is unprecedented. 50 years में कभी ऐसा तो हुआ ही नहीं है कि international students are attacked the way they are attacked right now. US has been the place of economic stability, land of opportunities, visa stability. ऐसे कोई announcement से visa revoke तो नहीं हुआ पहले. आप ऐसे देखो. So in my time, I went during the end of Obama term, and like elections were happening for Trump to be elected in 2016. So I knew things could be like anti-immigrant stance could be there, but I still knew ki what's happening right now, it's not what's going to happen 4 years later. So I can give you examples, right? अगर आप future predict करने लग जाओ तो कोई US जाएगा ही नहीं. So for example, 2001 में 9/11 happened, 2008 में financial crisis happened, and 2022 में COVID happened. People who came during those recession eras, like even dot-com bubble 2001, they got more opportunities 2 years later when job market exploded as compared to the people who went during stability. They struggled more. For example, अगर आप COVID में देखो, COVID में people who went, उन्होंने क्या किया, defer ले लेंगे, they will go in 2021. Those who went in 2021 graduated in 2023. They had worse job market than people who went in COVID 2020 and graduated in 2022 had the best job market. So that is Fair. also true. So आप predict नहीं कर सकते. दुनिया में what are the top 3 study abroad destinations, and roughly speaking वो कितना cost करती है? So first of all, let's build up where Indian students are highest in the world. I think it's number 1 Canada, then US, and number 3 is UK and Germany. That's what I've read. Number 1 is Canada. Canada, like every year enrollment. But abhi, like I think last year mein change hua tha. Like more students went to US. अच्छा. So I think the numbers were around 300K plus to Canada, 250K to 300K to US. So top pe rehta hai. But like since Canada got overwhelmed with immigrants, so they were like thoda sa unhone PR kam dene shuru kiya. US was bigger destination for Indians. आप ऐसे नहीं कह सकते कि it's certain कि one country is expensive, one is cheaper. There are so many variables. City you choose,
cost of living, scholarships you get, and even on-campus jobs you get. Average, an Indian student pays highest in the US for masters and undergrad. Then it would be Canada. Then it would be probably UK will be around the same line, but Germany will be on a cheaper side than all three, and Australia is also on a similar stage. In terms of absolute amounts, ballpark figures also, वो कितने होंगे roughly? An average master student spends 50 to 70 lakhs uh, in the US, maybe 30 to 50 in Canada, maybe Germany it could be like 5 to 10 lakhs, and Australia may similar like US, UK. So think like that, because a lot of people get more opportunities in US, तो वो cover ज़्यादा जल्दी होता है as compared to countries like Germany or Canada. That's what I've seen. Now let's speak about the US क्योंकि आपने अभी उसके बारे में बात किया. US में top 3 universities कौन सी है that one can explore, and वहाँ पे average fees क्या होती है? After you graduate, what are some average placement figures जो आप expect कर सकते हो? I know on-campus placements नहीं होती, but after that the jobs that one can expect. Top 3 for a tech perspective, I'll say, and holistically, I will say Harvard, CMU, Georgia Tech, UIUC, other universities in California, which are amazing because of the location, like, Stanford, UC Berkeley, UCLA, USC. I, follow the mantra of Three Idiots कि एक अच्छे स्कूल में जाने के लिए यूनिफॉर्म चाहिए instead of paying the tuition fee and going to that university. I went to like close to top 100 or even top 150. मैंने ranking भी आसपास नहीं देखी. It was not like top 10, 20, top 30. मेरे टाइम पे तो यही कहा जाता था, average university in the US is better than average university in any country in the world. Because US opens you to way more opportunities, even with an average state university in the US. What I did was I subscribed to the newsletter of Georgia Tech. उनके आसपास था. Even though I was studying at Georgia State, classes skip करके उनके career phase में जाना, उनकी opportunities grab करना, going to their tech events, making friends there, connections there from first year. Even my YouTube channel, पे लोग सोचते थे I'm going to Georgia Tech because all my videos were coming from there, because top folks were there. They don't see कि आप कहाँ से आ रहे हो, they see your skills, and if they like you on your face, they will have you. तो इन universities की average fees कितनी होती है? So Georgia Tech की like अभी 2 CR से ऊपर है. ठीक है. I mean Georgia State की around 1.5 CR होगी. It's very expensive for undergrad, and for masters like 70 to 80 lakhs. उसके बाद जो salaries हम expect कर सकते हैं, especially for entry level freshers, तो वो ballpark कितने figures होते हैं? Tech में it will be like 100K average. I'll say 180K if you're in Bay Area, San Francisco, 150K in New York, Seattle, etc. And like in any other average city, like close to 100K, 90K, 100K. If you're like spending 80 lakhs, तो 2 साल में masters का return आ जाएगा. If you are doing undergrad, तो 3 to 4 years में you should have your return on investment. When we talk about studying abroad, right? We spoke about this earlier कि uncertainty बहुत रहती है. जैसे Russia Ukraine war छिड़ गई. Indian students in Russia got deported overnight. As an international student, आपने इस uncertainty से कैसे deal किया? Because at different points in time, the nature of uncertainty changed. मतलब उसकी packaging change होगी, but there's still a question mark on job मिलेगी नहीं मिलेगी and so on. So, and how can students right now deal with the uncertainty? Okay, so first of all, students should see before this administration as well what is the uncertainty they had. So an average Indian applying for F1 visa, even during Biden administration, even during Obama administration, in the last 4 years before Trump, the probability of an Indian student getting a student visa is 60%. 40% of student visas get denied to Indians irrespective of who is in White House. Like if you are like very skilled in your interview skills and you're getting into good university, you have the reason why you're going, it's pretty clear, and you're not showing the intent to settle in the US. So I mean, they accept your visa, but still uski bhi chances 60% hai. Mere time pe bhi difficult tha. Me getting that student visa, looking at this probability, I was like, wow. Like I got accepted to 1 university, I applied to 6. Oh. People apply 3 times and they pay the visa fee from their own pocket. $200 3 times to get that visa cleared. And same is happening at a rigorous level. Maybe the probability of 60% has reduced to 50, 55. It's lower now. Because what's happening with Harvard, I saw कि Harvard had ban on international students. It took 24 hours to judge to revoke that. Within that 24 hours, all the students who were interviewing for Harvard, they got rejected. They will be paying out of their pocket $200 दोबारा visa interview देंगे. So depending on the consulate who is listening to which side, listening to courts or listening to the executive order,
They are deciding कि यार अगर हार्वर्ड का स्टूडेंट है, let's reject or pass. So Harvard's decision is based on consulate right now. Harvard का rejection rate is highest right now. Think US as a bet. What Ray Dalio says is कि it's a river of opportunities. You have two options. You can dive in that river, swim in that river, and there's a 90% chance that bet will work out. अगर आप दूसरी option है, you can just stay outside the river, not dive in, not swim, and then you will be worse off not taking that bet. And I totally agree. US will continue to go on from some country with immigrants from some country or the other, but it's our responsibility to take that bet because it has always been difficult to go to US. इंडिया वर्सेस यूएस की कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड सैलरी डिफरेंसेस की बात करते हैं. एक एंट्री लेवल फ्रेशर जॉब इंडिया में उनको रफली 10 लाख रुपीस पर एनुअम लेट्स से मिलेगा. सेम रोल के लिए in the US you get about $50,000 to $60,000 per year, right? Which is 5 times the difference. So at the same time though there is purchasing power difference that needs to be factored in. तो आप ये math कैसे करते हो? I can assure you, even with purchasing power parity, India gives less opportunities. Even for a PhD student, like jiska brain drain in the country is the highest. Like PhD students get 30 to 40,000 rupees, and US may they're getting $2,000 to $3,000 per month. This huge difference. Consider the housing cost, which is extremely high in India as compared to the US. So that's why I think purchasing power parity ke baad bhi US gives you more for your hard work, more for the efforts you put in, more for the dollar you make, at least in the tech sector. Of course, you can name some exceptions like Atlassian is giving 1 CR in Bangalore. So how is that fair? Of course, there are outliers, but average cases mein, it is true that US, even for purchasing power parity, it gives you more in your hand. In absolute terms, you might get paid a lot more in the US than in India. लेकिन let's face it, life is a lot more easier and comfortable in India. तो फिर भी क्या आपको लगता है the trade-off is worth it? So define comfort. Is comfort to learn to become self-independent? Like even you go to McDonald's, आप अपना टेबल खुद साफ करके आते हो. Or comfort is becoming lazy and get everything in 10 minutes and not going out of the house. So you have to define comfort. Like, you know, air quality, you can talk about it, but I think it's decent in some parts of India. So I will not talk about ki, is comfort air quality or not. Nice save. Okay. Comfortable तो है ना, like जैसे there are apps जिससे 10 minutes में you can get a house help to clean your house and you don't have to do anything. You spend less time doing all of these chores and you can spend that on things which might have higher dividends, right? Sure. I mean, I'll be very honest. Like, you know, it might be hurtful what I'll say, but the productivity is still highest in major US cities with the same traffic as compared to India. Listening to podcasts or whatever I'm doing in cars, like when I'm driving or stuck in traffic or whatever I want to achieve, even in Ubers, I'm able to achieve more in traffic because of infrastructure. Like, यहाँ पे average Bangalorean spends so many hours in traffic, so many hours of productivity lost. That is true. So, So that I cannot deny. Yeah, even I get it कि आपको 10 minutes में चीजें मिल जाती हैं. US teaches you to make a system that even if you're not getting things in 10 minutes, you're more planned कि आप वो चीजें ना भूलो जो आपको 10 minutes में चाहिए. Like me, more disciplined. Check your to-do list. Don't forget things. Things will be delivered in 2 hours. यहाँ पे तो like, you know, even scooter can be delivered in 10 minutes. This is mind-blowing. Temporary number plate के साथ. लेकिन what would you rather pick? Being a first tier citizen in India in terms of rights or being a second tier citizen in the US? मैंने post की थी that I'm moving to India. उस पे जो 10 hateful tweets थी that people voted for this to happen. So तब जाके मुझे लगा कि हाँ, I am a second tier resident of US. पर like on face कभी कोई नहीं कहता. For example, मुझे जो चीज फेस पे लगती है यूरोप पे, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यूरोप में एस्केलेटर चल रहा था, कोई पीछे मुड़ के दिखता है कि ब्राउन बंदा है और वो 10 एस्केलेटर दूर चले जाता है. लाइक आई फेल्ट मोर विजिबल रेसिज्म इन यूरोप जब मैं वहां पे रहा एज कम्पेयर टू यूएस में अभी भी लगता है लोग किसी को भी वोट कर रहे हो, किसी भी पॉलिसीज के लिए वोट कर रहे हो, पर दे स्टिल वेलकम यू विद ओपन आर्म्स, क्योंकि इतने अच्छे लोग मुझे मिले इन यूएस. whether it's San Francisco, whether it's Atlanta, New York, हर जगह. Of course, India में बहुत अच्छे लोग हैं. तो again, nice save. So I would have my perfect answer as I am in India for 1 year. I would choose
to be citizen of India and see world as my home. जहाँ पे कोई opportunity better मिलती है, I'll go grab and come back home. I'll say that. So remote jobs में like क्या हो रहा है कि हम डॉलर रेट्स पे पैसे कमा रहे हैं, काफ़ी सेविंग्स का पोटेंशियल था, लेकिन INR रेट्स पे पैसे खर्च कर पा रहे हैं क्योंकि वी लिविंग इन इंडिया, बट लेकिन फॉरेन क्लाइंट्स होंगे. नाउ दैट इज़ एन ऑप्शन. इज सेटलिंग इन द US स्टिल वर्थ इट, या फिर आपको लगता है अब रिमोट जॉब्स का ज़माना रहा है तो इट्स फाइन टू स्टे इन इंडिया बट वर्क रिमोटली देयर? Living in India, if you have good savings, आप US कभी भी जा सकते हो for grabbing those opportunities, because right now how this world order is changing, अभी जो maximum opportunities US में शायद कल वो distribute हो जाएंगी in India, China, Europe. So people would be traveling to get that particular opportunity by going to that country. For example, आपको बताता हूँ, अगर किसी को बैटरी टेक्नोलॉजी में कुछ सीखना है, चाइना इज द लीडर. मैं अभी शेंजन गया था, शेंजन चाइना, वहां पे 90% कार्स मैंने देखी थी यार ईवीज. दो तरह की है जो बहुत पॉपुलर है. BYD 5 मिनट में 400 किलोमीटर आपको चार्ज कर देती है. दूसरी है कि CATL बैटरीज, आप गाड़ी लेके जाओ, खाली बैटरी निकाल देंगे और नई बैटरी भरी हुई डाल देंगे. सो विद इन 5 मिनट्स यू आर फुली रेडी टू ट्रैवल 400 किलोमीटर्स. अगर किसी को ऑफ कोर्स बैटरी टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज चाहिए, दे गो टू PhD इन दोज यूनिवर्सिटीज इन चाइना, और वहां जाके आप BYD, CATL जैसी कंपनीज में काम करो तो वो ज्यादा होगा. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि पावर इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड मोर एंड मोर थ्रू आउट द वर्ल्ड इंस्टेड ऑफ वन कंट्री. तो मुझे लगता है कि अपनी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी जहां आपको मिलती है, अगर इंडिया में मिल रही है, यू आर हैप्पी, स्टे देयर. एंड डोंट फॉरगेट कि वर्ल्ड इज योर होम एज वेल एज मच एज इंडिया. इंडिया वर्सेस अब्रॉड का कंपैरिजन तो हो गया. लेट्स टॉक अबाउट योर लाइफ इन द US. लेट्स गो बैक इन टाइम. आप US पहुंचे हो. हाउ टफ वाज इट टू ब्रेक थ्रू द प्रोफेशनल नेटवर्क देयर? बिकॉज क्या है ना, इंडिया में यू हैव योर फैमिली हियर, थोड़ी फैमिली बैकिंग होती है तो थिंग्स बिकम थोड़ा सा ईजी. हमेशा से मुझे पता था कि नॉकिंग डोर्स इज द बेस्ट वे. लाइक आपको अपॉर्चुनिटी घर बैठ के रेफरल मांग के कोल्ड ईमेल से नहीं आती है. आई डिडंट गो टू अ ब्रांडेड स्कूल. तो मुझे आदत ही फर्स्ट सेमेस्टर से पड़ गई कि पहली जॉब गेट खड़खड़ा के मिल रही है बाय नॉकिंग डोर्स, देन आई एम नॉट गोना गेट अपॉर्चुनिटी सिटिंग एट होम. तो मैंने हर सेमेस्टर हैकाथॉन, हर सेमेस्टर करियर फेज, जॉर्जिया टेक, कभी किसी यूनिवर्सिटी, एमरी यूनिवर्सिटी, जो भी आसपास यूनिवर्सिटीज थी, आई जस्ट वेंट देयर. फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जॉर्जिया टेक में जो करियर फेज होते हैं, लाइक आप प्रोफेशनल सेटिंग की बात कर रहे हो, कॉर्पोरेशन से बात करना, अप्लाई करना एंड लाइक बेग फॉर वर्क. लाइक आई वेंट टू जॉर्जिया टेक्स करियर फेयर इवन दो आई वाज अ जॉर्जिया स्टेट स्टूडेंट. वहाँ पे गया, कहते आप तो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते नहीं, आप यहाँ कैसे आ गए? मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ रिसर्च कर रहा हूँ. तो दे सी दैट कि दिस गाय हैज गट्स to come and open doors for himself. और उन्होंने मतलब एक आधा जोक क्रैक किया and that opened my door to first second internships. आप इंडिया में भी कर सकते हो, बस यूनिफॉर्म की जरूरत है. आप इंडिया में IIT बॉम्बे का एक दोस्त बनाओ, उसको बोलो कि मुझे अंदर लेके जा. अंदर जाने के बाद कोई चेक नहीं करता कि तुम्हारा ID कार्ड कौन सा है. It just takes that one friend. Got it. I remember seeing in a video जहाँ आपने hackathons को foodathons के नाम से describe किया and you attended some 17 of them. तो ये जो hackathons है, besides giving you free food, how did they help you in your technical skills and career opportunities? उनमें कैसे contribute किया? नहीं, I care about food most. यहाँ पे भी मैं खाने की हमने ज्यादा बात नहीं की. And like I've eaten a lot of food here as well, free food. So jokes apart, so I was always budget driven. Like first year में I had $300 in my bank account intentionally. मैंने ज़्यादा पैसे मांगे ही नहीं, because I was like कि if I have this much funds, तो मेरे पे motivation ज़्यादा होगी to get on campus job, to find ways to make things affordable. तो अब जैसे $300 थे, I used to spend $50 on food, और जो कि बहुत कम है like US में groceries पे. So I was like कि हर रोज ढूंढना where food opportunities are there, free food opportunities are there, and going to those events. उन events पे networking भी हो जाती थी और खाना मिल जाता था. Staying in that places overnight, वहीं पे सोना, वहीं पे like I bought a sleeping bag, वहीं पे ले जाना. पूरे US से लोग आके hackathons में compete करते हैं. This is a great gateway to find competitive people who will make you jealous कि यार ये मुझसे आगे कैसे निकल रहा है. तो आपको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स की जरूरत होती है. ऑफ कोर्स आप कहते हो कि बेस्ट फ्रेंड फर्स्ट आता है तो दुख होता है, वैसी फीलिंग आनी चाहिए. अब बात करते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट के बारे में. व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज जो आपने यूज़ की टू पे बैक योर कॉलेज फीस इफेक्टिवली? मतलब वेदर इट्स स्कॉलरशिप्स या ऑन कैंपस जॉब्स या इंटर्नशिप्स, व्हाट वर्कड फॉर यू एंड जनरली स्टूडेंट्स क्या यूज़ कर सकते हैं? डे वन होना चाहिए कि फर्स्ट आपको रेंट कैसे कवर करना है. ऑन कैंपस जॉब आप 20 आवर्स कर सकते हो. डे वन या जिस दिन आप यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट हो चुके हो,
रीच आउट टू द यूनिवर्सिटी फॉर अपॉर्चुनिटीज। ईमेल देखो चलता है नहीं चलता है, ठीक है, नहीं तो आप यूनिवर्सिटी में आ गए, नॉक डोर्स, रीच आउट टू प्रोफेसर्स, रीच आउट टू प्लेसेस वेयर यू कैन हैव ऑन कैंपस जॉब्स। अब यहाँ से आपका रेंट कवर हो जाएगा जैसे मैंने किया। अब नेक्स्ट इज समर इंटर्नशिप ढूंढना, ताकि यू आर गुड जब आप 2 साल या 4 साल बाद ग्रेजुएट हो गए, आपके पास फुल टाइम जॉब लाइंड अप है। तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत बहुत लोग पूछते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस लेके आए कि नहीं आए टू गेट लाइक गुड टेक जॉब लेटर, तो आपको ये नहीं सोचना कि आपका पास्ट में क्या आपने मिस आउट कर लिया। आपको सोचना है कि हाउ कैन आई एम इन द यूएस, हाउ कैन आई गेट इनफ एक्सपीरियंस कि ये जो बंदा 2 साल जेपी मॉर्गन काम करके आया है इंडिया से, उससे मैं बेटर कैसे बन पाऊँ। तो डे वन से यू फाइंड अनपेड इंटर्नशिप्स, अनपेड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, अनपेड और पेड अपॉर्चुनिटीज, जो आपको अपने इंडियन पीयर्स जो 2-3 साल एक्सपीरियंस लेके आए हैं अच्छी कंपनीज में, उनसे आप बेटर बन जाओ और बन सकते हो। लाइक कंपनीज आर डाइंग, स्टार्टअप्स आर डाइंग कि उनको फ्री में अच्छा एम्प्लॉय मिल जाएगा। दे विल डाई। बट बिग कंपनीज में होता है लॉज कि हम किसी को फ्री में नहीं रख सकते, हाँ, फ्री लेबर नहीं लग मे सकते। बी नॉट। इवन लाइक अदर टेक न्यूज जो आप फॉलो कर लो, जो स्टार्टअप्स अभी भी फंड हो रहे हैं, टेक क्रंच पे सभी आ जाते हैं, अप्लाई टू दोज, गेट अनपेड अपॉर्चुनिटीज। एंड बट लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी। ईयर वाइज आपने इन फीस को कैसे टैकल किया, कैसे So, रीपे किया? फर्स्ट ईयर मैंने ऑन कैंपस जॉब की डाइनिंग हॉल से, फिर मैंने मैथ ट्यूटर जॉब की, बिकॉज इंडिया में कैलकुलस हमें जेई के एग्जाम में सिखाती थी, तो आई बिकेम मैथ ट्यूटर बिकॉज मैंने एपी एग्जाम्स दिए थे, उससे रेंट कवर हो गया। नाउ इंटर्नशिप ढूंढने के लिए फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट मंथ में ही मैं करियर इवेंट्स जाना शुरू कर दिया। आई वेंट टू जॉर्जिया टेक, मेरे आसपास था, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ग्रैब की। आसपास जितने भी टेक कंपनीज आते रहते थे, हर कंपनी के इवेंट में घुस जाना, ठीक है, उनको रेज्यूमे देना, एंड देन इंटर्नशिप मिल गई। सो इंटर्नशिप मिली तो आई गॉट लाइक $10,000 to $12,000 इन माई इंटर्नशिप, $20 एन आवर। अब उस इंटर्नशिप से मेरी नेक्स्ट सेमेस्टर की ट्यूशन जो कि $5,000 थी, मैंने बताया, सो माई ट्यूशन फी सेकेंड ईयर से रिड्यूस फ्रॉम $17,000 a semester या $35,000 a year to $5,000 a semester या फिर $10,000 a year। ये तो काफी सिग्निफिकेंट है। हाँ, तो आप समझ लो $10,000 जो कमाए, $10,000 सीधा दो सेमेस्टर्स की, 1 साल की ट्यूशन फी कवर हो गई। दिस इज लाइक द ड्रीम फॉर एवरी इंडियन स्टूडेंट अब्रॉड। तो अब हाउसिंग का कवर करना था, तो उसके लिए मैंने क्या, इंटर्नशिप वालों से बात की कि मुझे आप पार्ट टाइम दे दो, तो वही $20 एन आवर पार्ट टाइम मिल गई। सो एंड आई वाज मेकिंग $1,200 पार्ट टाइम, तो उससे मेरा रेंट जो कि था सिर्फ $300, जो आपने वीडियोस में देखा होगा, आई वाज लिविंग इन अ लिविंग रूम, और 2 बेडरूम अपार्टमेंट था। लिविंग रूम में एक पार्टीशन खरीदा, वहां लगा दिया, और शेयर किया बाथरूम, एंड इट वाज नॉट दैट अनकंफर्टेबल फॉर मी। पार्ट टाइम जॉब से मेरा पर मंथ रेंट चला गया, खाने के एक्सपेंसेस चला गया, एंड इंटर्नशिप से मेरी ट्यूशन की फीस चली गई। और इंटर्नशिप से मैं ऊपर ही गया, नीचे नहीं गया। अगर $20 आवर काम कर रहा था, तो 25-28 की तरफ स्टेप अप किया, ना कि स्टेप डाउन। सो 19 या 20 के बीच में आई डिडंट हैव टू टेक अ सिंगल डॉलर फ्रॉम माय पेरेंट्स। दैट इज एन अचीवमेंट। तो इसको आप लक भी कह सकते हो और हार्ड वर्क भी कह सकते हो। एग्जैक्टली वो जो इंटर्नशिप का स्टाइपेंड था, दैट $10,000 इमीडिएटली वेंट टू रिड्यूस ट्यूशन फीस का जो भी लोड था। इज इट रियलिस्टिक फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सपेक्ट इतना अमाउंट, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप्स शुड दे लुक आउट फॉर? They can expect even more. It depends on how hard they're aiming for. तो मैं बताता हूँ, जैसे कि अगर आप बे एरिया में Amazon, Intuit, Salesforce, Atlassian में इंटर्नशिप ले लेते हो, you will get $45 to $55। आपको साइनिंग बोनस $5,000 अलग से ले लेते हैं। I have seen people जो $30,000 to $40,000 एक इंटर्नशिप में कमा लेते हैं, दैट्स क्रेजी। और हाउसिंग भी इंक्लूडेड होता है बे एरिया में। और इनफैक्ट तो माइक्रोसॉफ्ट तो सियाटल में आपको गाड़ी भी रेंटल फ्री देती है कि आप गाड़ी में चला के आराम से आओ ऑफिस इंटर्नशिप के टाइम। पर आप समझ लो 30,000 35,000 भी मिल सकते हैं। डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड you're aiming for, how good is your network in Bay Area where highest number of opportunities for tech people are there। यूएस में कौन सी पार्ट टाइम जॉब सबसे ज्यादा लुक्रेटिव होते हैं फॉर स्टूडेंट्स, एंड हाउ डू यू मैनेज योर टाइम बिटवीन वर्क एंड स्टडीज? Most lucrative for them would be what helps them in their career। क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड कि अगर मैं ये पार्ट टाइम जॉब लेता हूँ, मेरे रेज्यूमे में विल दे हैव अ कोहेरेंट रेज्यूमे कि अच्छा मुझे टेक जॉब लेनी है, उसके रिलेटेड है कि नहीं। फॉर एग्जांपल कोई सीएस में किसी को रोबोटिक्स पसंद है, साइबर सिक्योरिटी पसंद है, वेब डेवलपमेंट पसंद है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पसंद है, बेस्ड ऑन व्हाट दे लाइक, उन प्रोफेसर्स, उन टेक स्टार्टअप्स को रीच आउट करना जरूरी है, एंड रीच आउट टू देम एंड मेक श्योर कि आप अपने आप को पिच कर रहे हो दैट दे वांट यू। ऐसे वैल्यू दो पर्सनलाइज मैसेज से,
and then get those opportunities which will help them in their career. सीधा एक डाइनिंग हॉल में या फिर लाइक बर्तन धोने में या फिर ऐसे छोटे मोटे काम करने में जो करियर के रिलेटेड नहीं है, कोई काम छोटा है बड़ा नहीं होता, बट अगर वो करियर के रिलेटेड नहीं है तो उससे आपका लॉस ही होगा, चाहे पैसा मिल रहा है. वो कंपाउंडिंग इफेक्ट किक इन ही नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बहुत ही अनरिलेटेड हो गया फ्रॉम व्हाट यू इवेंचुअली वांट टू डू. टोटली. आपके केस में यू डिडंट हैव टू टेक अ लोन बिकॉज यू वर एबल टू गेट स्कॉलरशिप्स एंड पार्ट टाइम जॉब्स एंड सो ऑन, लेकिन काफ़ी लोग को लोन लेना पड़ता है. तो टोटल फीस का कितना परसेंटेज का यूजुअली लोन मिल पाता है एंड एट व्हाट इंटरेस्ट रेट? टोटल जैसे कि एसबीआई में अगर मैंने लोन का पता करूं, दे वर गिविंग लाइक 8 to 10% इंटरेस्ट रेट आईएनआर पे. और यूएसटी में भी अगर आप कंपनीज लाइक जो टॉप कंपनीज है यूएसटी में लोन लेती है विदाउट कोलेटरल एंड को साइनर, वो बेस्ड ऑन विच यूनिवर्सिटी यू गेट एक्सेप्टेड. वो स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए इतना आसानी से लोन नहीं देती. सो डिपेंड करता है. अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, दे बेट ऑन यू कि आप ये अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके अच्छा पैकेज लेगा और हमें पैसा लौटा देगा. अगर आप एक एवरेज यूनिवर्सिटी जा रहे हो, ये कंपनीज नहीं दे रही, तो आपको इंडिया में ही लोन लेना पड़ेगा. तो 8-10%, 12%, 14% भी जाता है लोन. 14%? या यानी ये फ्लोटिंग रेट है या फिक्स्ड है? नहीं, चेंज होता रहता है बेस्ड ऑन लाइक नेशनल इंटरेस्ट रेट्स एंड एक्सेट्रा. गाड़ी का लोन 10-12% होता है, उसके आसपास ही रहता है ये लोन. एंड लोन रीपे करने में कौन सी स्ट्रैटेजीज स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकती है? सो मुझे लगता है कि अभी हिस्टोरिकली आईएनआर डिप्रिशिएट हो रहा है, यूएसटी एप्रिशिएट हो रहा है. और अगर आप यूएसटी में एसेट्स भी रखते हो और यूएसटी के जो स्टॉक मार्केट है उसमें भी एप्रिशिएट हो रहा है. सो आई पर्सनली थिंक कि अगर आप आईएनआर में लोन लेते हो और यूएसटी में पे करते हो, बेटर रहेगा. बिकॉज अगर आप आईएनआर में लोन लेते हो तो आपका देश है, ठीक है, आपके पास अगर एसेट्स है, यू कैन पे यूजिंग दोज एसेट्स. पर अगर आप यूएसटी में लोन लेते हो, यूएसटी कहाँ आसमान भी छू सकता है, गिर भी सकता है, तो थोड़ी प्रिडिक्टेबिलिटी कम रहती है, राइट. अगर इमेजिन करो आपको यूएस में जॉब नहीं मिलती, आपने यूएसटी में लोन ले लिया, यूएसटी एप्रिशिएट हो जाता है. आईएनआर अगर आप इंडिया जाके जॉब कर रहे हो, इंडिया से कमा कर एप्रिशिएटेड यूएसटी में पे करना दिक्कत होगी और इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ेगा. एंड यूएसटी टू आईएनआर यूएस वैल्यू बढ़ रही है. सो बेसिकली आई थिंक अपने देश में अपनी करेंसी में पे करना थोड़ा स्टेबल ज़्यादा ऑप्शन रहेगा. पर अगर आपको किसी पॉइंट पे लग रहा है यूएस में जॉब लग रही है, आप रीफाइनेंस भी कभी भी कर सकते हो. यू कैन ट्रांसफर इट फ्रॉम इंडिया टू यूएस. रीफाइनेंस फीस होती है थोड़ी सी, तो आप रीफाइनेंस भी कर सकते हो. सो ट्यूशन एंड अकोमोडेशन फीस इज द मेजोरिटी ऑफ द एक्सपेंसेस, लेकिन वो कौन सी हिडन कॉस्ट होते हैं जो स्टूडेंट्स फैक्टर इन नहीं करते बजटिंग के टाइम? आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रैवल, यू हैव टू ट्रैवल टू गो वेयर अपॉर्चुनिटीज आर इन द यूएस. न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, वेयरएवर द टॉप इवेंट्स आर कमिंग, वो ट्रैवल में बहुत खर्चा लग जाता है. लाइक समटाइम्स यू डू होटल, समटाइम्स यू डू फ्लाइट्स. सो कहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है जो लोग सोचते भी नहीं है, दैट इज इन्फ्लेशन. फॉर एग्जांपल अगर एवरेज या फिर ईयरली यूएस में अगर इन्फ्लेशन इन द लास्ट 30 years इज 2%, जो भी चीजें आप खरीद रहे हो एवरेज, हर चीज का प्राइस टोटल 2% बढ़ रहा है. पर कॉलेज ट्यूशन का इट्स 6 to 10% इन द यूएस. तो बेसिकली आपकी ट्यूशन फी अगर $10,000 है, एक साल बाद 10,600 हो सकती है. अगर 10,600 अगले साल, वो 6% और मिला के इट कुड बी लाइक 11,000 से ऊपर. यू हैव टू थिंक ऑफ द अनएक्सपेक्टेड एज वेल, कि एक्सपेंसेस आप फर्स्ट ईयर के हिसाब से नेक्स्ट 3 years प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. इफ यू आर गोइंग फॉर अंडरग्रेड, यू हैव टू थिंक कि ज्यादा ही लगेगा, कम नहीं लगेगा. ऑलवेज ओवर एक्सपेक्ट. या दैट्स क्रेजी, 6% इज अ लॉट. तो जो भी लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं ऑन अ मंथली बेसिस, उनका आपके लिए ब्रेकअप क्या था? अगर हम एक पाई चार्ट यहाँ पे बनाए. Sure. So number one, rent, it was $340, 340 to $400, and then SIM card like $15, and like food ka bill $50 to $70, and then iske baad transport, taking some flights, Uber एक आधा बार हफ्ते में. So that became like maybe $50 more. So $300 to $500 के बीच में था. I never let it be above that. If I have to think right now with the situation, वो $200 ज़्यादा होगा, because if I live in the same living room, similar environment, based on inflation, क्योंकि ये हम 6-7 साल पुरानी बात कर रहे हैं, right? Minimum in my city Atlanta. Based on other cities it could be more. तो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट वो कौन से हैक्स थे जिससे आपने पैसे बचाए? So number one was like staying close to campus. अगर आप कैंपस के आसपास सस्ती जगह ढूंढ लेते हो, आपको दिन अगर कभी लेट हो रहे हो, टैक्सी नहीं करानी पड़ेगी, ऊबर नहीं करानी पड़ेगी, आपको ट्रेन बसेस का खर्चा नहीं करने की जरूरत. सो एंड देन नेक्स्ट थिंग इज फाइंड द अफोर्डेबल हाउसिंग. कीप योर
monthly expenses low because housing is the major big expense which is in your hands. Live with more roommates, it's okay, but live with good roommates. जैसे आप कपड़े खरीदने से पहले पहले ट्राई करते हो, वैसे ही ट्राई योर रूममेट्स एंड यू कैन ट्राई बाय विजिटिंग देयर अपार्टमेंट. देखो अगर उनका अपार्टमेंट अभी साफ है, उनको विजिट करके देखो कि अगर अभी साफ है तो जब आपके साथ रहेंगे तब भी साफ होगा. बेसिकली Surprise रूममेट्स को टेस्ट ड्राइव करो हाँ. बिफोर यू साइन अप. या उनको कहो कि तू एक दिन मेरे साथ रह ले, मैं तेरे साथ रह लेता हूँ, देखो वो क्या खाना बना रहे हैं, लाइक यू नो अच्छा लाइक ये भी होता है. हाँ, उनको कहो कि एक दिन, मतलब यू कैन टेस्ट एवरीथिंग. आप यूएस में हर चीज की रिटर्न पॉलिसी है. आप आईफोन हाँ. खरीद के 2 हफ्ते बाद रिटर्न कर सकते हो, वैसे ही आपको हर चीज टेस्ट करनी चाहिए. एंड अब्रॉड वर्सेस इंडिया में मंथली सेविंग्स का कोई मैजिक नंबर होता है क्या, खासकर इफ वी कीप इन माइंड मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस जैसे इन्फ्लेशन हो गया या लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेशंस हो गए. पहले आप बताओ इंडिया में कैसे होता है. तो जनरली लाइक मोस्ट एक्सपर्ट्स से कि 50-30-20 करके कोई रूल होता है. 50% आर योर नीड्स, 30% आर योर वांट्स एंड 20% यू सेव और यू इन्वेस्ट. बट मतलब प्रैक्टिकल सेंस में जैसे अगर डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, अगर आप कोई लोन रीपे कर रहे हो तो यू ऑफ कोर्स मे नॉट बी एबल टू सेव एज मच, राइट, एंड देन ग्रेजुअली यू बिल्ड इट अप. तो यूएस में वो कैसा होता है? आई मीन मुझे रूल्स ये तो नहीं पता, बट मेरे प्रिंसिपल्स यही हैं कि लाइक यू नो दैट रेंट शुड बी अराउंड माई 33% ऑफ माई सैलरी. मेरे लिए यहाँ पे लाइक यू सेड 50% शुड बी योर नीड्स, तो आप 33% से ज़्यादा रेंट नहीं होना चाहिए मेरी कैटेगरी में. आई फील लाइक इफ आई मेक लेट्स से month if $10,000 is coming, rent should not be more than $3,300. Like that's how I think. But usually उससे भी कम ही जाता हूँ मैं. Like I try best location and कम से कम हो. I feel like you should not buy anything. एक capitalistic mindset जो मेरे principles मैंने सीखे हैं from Bay Area, from the US is that you should rent before you actually buy. So for example, इसको अगर थोड़ा broad way में लेना हो, rent before you lease before you buy. So this is a principle. So let's start with even principle you are implementing. This building is on lease. You didn't buy this. Microsoft अपनी building, Google, सारी companies अपनी buildings lease करती हैं. They don't purchase it. Similarly, I live on a rented apartment. I didn't buy it because that gives you mobility. That gives you freedom to move. That gives you flexibility. If anything, from your immigration point of view, from US point of view, things change, you can take your decisions quickly. Same with car rent. Agar main Tesla Model 3 I bought, so if I rent it per month, मुझे गाड़ी पसंद है नहीं पसंद है, एक महीना रेंट का will be like $500 मैं रेंट कर सकता हूँ. But if I buy it, it will be a $700 to $800 monthly EMI या फिर लीज का कॉस्ट वो जाता रहेगा, और वो 3 साल तक लीज के लिए मैं लॉक हो जाऊंगा, और अगर खरीद लिया तो मैं 5 साल तक के लिए लॉक हो गया. लाइक यू नो आई हैव टू यूज इट प्रॉपर्ली एंड देन कवर दैट $60,000. तो वही सोच रहा हूँ. सो डोंट टाइटन योर सेल्फ, कीप योर फाइनेंसेस फ्लूइड. जब आपका इमिग्रेशन स्टेटस इट्स नॉट सॉलिड इनफ कि आप मूव इजीली कर पाओ फॉर योर बेटर अपॉर्चुनिटीज. जितना आप अपने आप को लॉक इन कर लेते हो, फॉर एग्जांपल इफ यू लिविंग इन अ फैमिली, आपने घर खरीद लिया है, आप उस सिटी में बंद गए हो फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज इन बे एरिया, न्यूयॉर्क, इफ दैट कम्स टुमारो, you can take that decision to move. Yeah, basically you're putting handcuffs on your own to yourself, right? Don't do that. काफ़ी applicants की profiles बहुत मतलब average type लगते हैं, बहुत ही cookie cutter type लगते हैं, right? And especially वो students जो competitive exams के rat race में फंस जाते हैं. They become very unidimensional, जैसे cardboard cutout होते हैं ना वैसे. तो how does a student in India make their profile better, more holistic? So I think a student can make it more holistic by like you know finding the information. Like for example, India में schools हैं, colleges हैं जो शुरू से ही abroad की तैयारी कर रहे हैं. They have the kind of information that you will not find easily on Google. For example, coming to Ambani school or like you know popular schools like Sri Ram schools, जो top schools of India है, वहाँ के बच्चे 9th से ही abroad की तैयारी करते हैं. They go into leadership, clubs create करना, clubs lead करना, getting into MUNs, going outside the country to represent India, and like you know working hard is separate, but getting that information and then working hard towards that goal is separate. वो लोग जिस गोल के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, इट्स अ वेक्टर गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. एक एवरेज स्टूडेंट हर एक में ब्रेथ फोकस करता है, डेप्थ नहीं करता, बिकॉज इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लाइक इतनी ट्रेनिंग नहीं है. सो फाइंड दैट पीपल ऑल ओवर इंडिया. क्योंकि सच ये क्या है, सच मैं बताता हूँ, अगर कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी देख लो, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, these students वो कहते हैं कि हम हर तरह के बैकग्राउंड से स्टूडेंट लेते हैं, बट सच ये है
50% of the students who get accepted to these universities are coming from privileged, elite background, who pay the highest in tuition. वो prepared होके जाते हैं towards that goal. इस कारण वो वहाँ गए हैं अपने privilege, अपने पैसों के लिए. Even though they are not extremely rich, but they invested their money into elite schools in their childhood. और वो eliteness उनको आगे और elite लेके जा रही है. So privilege of going into eliteness in India helps you along the way. Wow, it's like eliteness breeds more eliteness. वो Correct. gap in perpetuity बढ़ता ही जाता है फिर. बिल्कुल बिल्कुल. Interesting insight. So meritocracy जो कहते हैं ना कि हर चीज merit based होना चाहिए, सच ये है कि like there's nothing meritocracy. Like wealth is unequally distributed, so it continues to be unequally distributed. But how you can beat that is getting information from people who are elite. And final question, काफी students स्कैम्स में इजीली फंस जाते हैं, जैसे फेक लिस्टिंग स्कैम्स. कोई प्रॉपर्टी लिस्ट होती है, स्टूडेंट अकोमोडेशन या कुछ, एंड दे शो अनरियलिस्टिकली लो रेंट्स, एंड पीपल हु डोंट नो मच फ्रॉम द आउटसाइड, उनको लगता है कि हाँ दिस अ ग्रेट ऑप्शन, दे साइन अप फॉर इट, एंड फिर पैसे बर्बाद हो जाते हैं. ऐसे कौन से स्कैम्स हैं दैट स्टूडेंट शुड बी अवेयर ऑफ? Yeah, of course, housing scam is one. I think the biggest scam that can happen to you is कि आपको एजेंट ऐसी यूनिवर्सिटी में भेज दे जो वेल रिकग्नाइज नहीं है, क्या पता लाइक इट्स नॉट रजिस्टर्ड एज फॉर अमेरिकन बोर्ड, और लाइक यू कैन बी वीजा लग जाए तो पोर्ट ऑफ एंट्री से डिनायल मिल सकता है, और लाइक इट्स नॉट रिकग्नाइज्ड enough in the US. So make sure you go to at least like average and above average. Below average mein mat hi jao. Like, you know, have people you talk to in the university. LinkedIn पे 100 लोगों को reach out करोगे, 10 तो reply कर ही देंगे from that university. So make sure you take advice from people from all backgrounds. हर एक ने कोई ना कोई scam experience किया होगा. So it comes down to the same principle. एक type का scam मैं शायद बता दूंगा, but that scam can be solved when you take advice from the right people in that university with one email, one LinkedIn message. Very simple. But what are some other types of scams they need to be wary of? Roommate scam, for example, मेरे साथ हुआ है. Like roommate scam. Yeah, of course. Roommate apartment book कर लेता है, आपका नाम लीज में ऐड नहीं करता, पर कहता है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा. आप पहुंचते हो, वो दूसरा रूममेट सेलेक्ट कर लेता है. क्योंकि दूसरी बात क्या होता है कि जो रूममेट आपने किसी को सब लीज किया है, वो भाग जाता है, रेंट नहीं पे करता, आपके सिर पे बोझ पड़ जाता है. तो like, you know, lot of that roommate scams happen. So roommate quality people are very very important. Like, you know, that's why like काफी जो अंडरग्रेड स्टूडेंट्स है फर्स्ट ईयर तो ऑन कैंपस ही जाते हैं, स्कैम नहीं होता. फॉर एग्जांपल मेरे साथ स्कैम हुआ था रूममेट. सो आई पेड $300. एक रूममेट था, वो 600 भरता था, तो वो भाग गया. फर्नीचर पता नहीं रातों रात रेंट पे गया, फर्नीचर ले गया, फर्नीचर के साथ भाग गया. हाँ, रातों रात. मैं सो रहा था, सब मतलब एक दिन में शायद बाहर था, तो दूसरे दिन आया, भाग गया. यार आप दिन में क्लासेस भी होते हो ना, 9 से 3, तो उसमें चला गया. आप समझ लो कोई गैप ढूंढना, उससे पता था 3-4 महीने साथ में रहे हैं, भाग गया. अब कैंपस में दिखता है, मैं उसको कहता हूँ भाई दे दे, पर पुलिस कंप्लेन पता है आपको लंबे चक्कर खाने पड़ेंगे, एंड आप अपने इस इंटरनेशनल स्टूडेंट रिकॉर्ड पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते. यू नो, $600 थे, मैंने और मेरे रूममेट ने 300 स्प्लिट किए. वी रिकवर्ड फ्रॉम दैट स्कैम. सो बिकॉज मेरा रेंट पहले से कम था, तो इतना चुभा नहीं. ऑफ कोर्स 300 हर्ट मी अ लॉट, बिकॉज पर्सन हु इज मेकिंग 600 to 1000 a month, 300 इज लाइक 30% ऑफ हिज इनकम, तो हर्ट करता ही है. पर like it was not like a big deal. अगर $3000 रेंट होता, 1000 का स्कैम होता, it would have more hurtful, right? Thank you so much for your time, Harnoor. This is extremely helpful. Thank you so much again. It was great talking to you, and it was my pleasure. And that's a wrap on our detailed deep dive on studying abroad. आप क्या pick करेंगे? Studying in India or abroad? Comment below. This is Arunima Rao signing off from the Grow HQ. That's all for today. Until next time, keep growing. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.